Hello students, you are welcomed to the video lecture series of operating system. In this video lecture, we will learn about inter-process communication, that is IPC. So here we go to start our topic. So what is inter-process communication? There are various synchronization mechanisms that are based between two or more interacting processes in a shared memory environment. So another way to achieve the same effect for operating system is to provide means for interacting processes to communicate with each other via an interprocess communication. जब भी हम चाहते हैं कि कोई भी दो प्रोसेस या चार प्रोसेस आपस में इंटरेक्शन करें, so they interact with each other using the interprocess communication, right? And why we need communication? Because जब भी कोई प्रोसेस आपस में अपने shared variables या अपनी tables share करते हैं, so they interact with the IPC facility. So IPC provides a mechanism to allow processes to communicate and to synchronize their actions without sharing the same address space. It means they are not sharing the address space, but still they are communicating. So IPC is a mechanism that allows processes to communicate. IPC is best provided by a message passing system. हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन किसके थ्रू, मैसेज पासिंग सिस्टम के थ्रू, बिकॉज दे आर मैसेज क्यों पास करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट ऑन द सेम लोकेशन, राइट? दे आर नॉट शेयरिंग, प्रोसेसेस दैट आर नॉट शेयरिंग the same address space, we want to make them communicate. So we provide the communication using the message passing mechanism. And message passing can be defined in many ways. A message does not have a standard syntax and semantics. Message का कोई standard syntax या semantic नहीं है like the signals. Message passing suits the environment where processes wishes to exchange information or in situation where one process wishing to influence possibly after the course of execution of another process, right? So the need of message passing came. Need क्या हुई, क्यों हुई? Because of this using the techniques such as semaphore and monitor, राइट? सीमाफोर और मॉनिटर जो मैकेनिज्म थी हमारी, राइट, उससे ही इन्फ्लुएंस होकर जो नीड आई वो मैसेज पासिंग की नीड आई, राइट? सो the need for message passing came because of the techniques such as semaphore and monitor work well in the case of lock loop, where we are using a shared memory for different processes to interact to another on the same CPU, right? Same CPU पर ही अगर interaction हो रहा है and shared memory space है, then in that case we use semaphore and monitors. But what if they are not on the same CPU? What if they communicate over the network, right? So but they are not intended to serve the need of processes which are on physically different machine, प्रोसेसेस विच कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क. ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसेसेस नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करते हो या प्रोसेसेस सेम मशीन पर ना हो या सेम सीपीयू पर ना हो. देन इन दैट केस वी प्रोवाइड द आईपीसी मैकेनिज्म. सो एज वी डिस्कस्ड कि हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, मैसेज पासिंग के थ्रू. सो मैसेज पासिंग इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू टू सिस्टम्स कॉल. दो सिस्टम कॉल से मैसेज पासिंग इम्प्लीमेंट होती है. These calls are issued by library functions send and receive respectively. Send and receive से हम इनको access करते हैं. So process PI, suppose process PI wants to send message to process PJ. Process PJ को send करना चाहता है message, right? So it will send a message, right? And in send message it will include the address of the process, or we can say the process number कि किस process से वो communicate करना चाह रहा है. Let's say we have included PJ in the send message and we have included our message, right? So this is the syntax for sending the message, right? To send PJ and message, it will send the message. And suppose PJ is the receiver process, so it will get a receive message, right? Where it will include the address of the center. यहाँ पर center का address include होगा, right? और वो area या वो message include होगा जो कि आपका PI ने भेजा है, right? So this figure depicts the message passing system. So this figure message passing between process PI and PJ. Process PI sent a message, let's say ABC. Process PI क्या कर रहा है, एक ABC message भेजना चाह रहा है process PJ को, right? By executing the function call send, it will make use of send message, and it will include the address of PJ or process number PJ, and it will include the message ABC because PI wants to send message ABC to process PJ, which loads to a system called send, right? The kernel has to ensure that message ABC reaches the process PJ. ये ensure kernel को करना होता है
कि जो मैसेज ABC है वो प्रोसेस PJ के पास पहुंच गया है. When it wishes to receive a message, it means when it executes the system call receive. जब प्रोसेस PJ सिस्टम कॉल रिसीव को एग्जीक्यूट करेगा तब उसे वो मैसेज मिल जाएगा. To implement this, kernel first copies the message information into a buffer area. Buffer area में उस मैसेज का कंटेंट कॉपी करता है and awaits to receive call from process PJ. और PJ से रिसीव कॉल का वेट करता है, राइट. सो कर्नल का वर्क क्या है? कर्नल जो भी मैसेज का कंटेंट है, जो भी मैसेज की इंफॉर्मेशन है उसे बफर में स्टोर कराएगा एंड देन इट विल वेट फॉर अ रिसीव कॉल फ्रॉम द रिसीविंग प्रोसेस. There are various advantages of using message passing mechanism. The first advantage is processes does not need to use shared data for exchanging information. Processes को डेटा एक्सचेंज करने के लिए, मतलब शेयर डेटा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए शेयर डेटा की नीड नहीं होती है, राइट. दे प्रोसेसेस डू नॉट शेयर द डेटा फॉर exchanging information. Second advantage is the kernel can give warning if the data area mentioned in a receive call is smaller in size than the message to be received. यानी कि जितने साइज का मैसेज आपको रिसीव करना है उससे ज्यादा लेंथी आपने डेटा सेंड किया है, देन उस केस में कर्नल वार्निंग दे सकता है, बिकॉज यू कैन सेंड द मैसेजेस ऑफ साइज according to the limit, or we can say according to the capacity of the receiver. If receiver is not capable enough to receive the message, you cannot send the receiver, right. So receiver के size के according ही आपको मैसेज भेजना होता है. In case आपने large size का मैसेज भेजा है, so that in that case kernel can give you warning. Third advantage is messages may reside in buffer until they are received. जब तक receive नहीं किए जाते तब तक messages आपके buffer में रहते हैं. And the last advantage is the process may belong to different applications and may even exist in different system. Inter process communication के लिए process different applications में भी हो सकते हैं और process different system पर भी हो सकते हैं, right, over a network. So these are some advantages of using the IPC mechanism. So now we will discuss how we can name the processes in the messages, right. So there are two different types of mechanism: direct and indirect naming of processes. Indirect naming: each process that wants to communicate must explicitly name the recipient or sender of the communication. It means direct naming में आप send और receive message में उस process का direct name लिख देते हैं जिस process को आपको message भेजना है या जिस process से आपको message receive करना है. So message will be composed of like this: send PJ, message. It is used to send a message to receiving process PJ. So here this PJ indicates that PJ is a receiving process. And in the same way, in receive system call, receive PI, message area, right? Receive a message from sending process PI, right? So इस message में हमें पता चल रहा है कि PI is the sending process. So it is the direct naming where PI and PJ are process IDs assigned by the kernel, right? So here the communication medium has following property. जिस भी medium के through communication हो रहा है, it has following properties. A link is established automatically between every pair of processes that want to communicate. एक link establish हो जाता है उन दो processes के बीच में जो communicate करना चाहते हैं. Link is associated with exactly two process. जो link है वो केवल दो ही process से associate होता है. Exactly one link exists between each pair of processes. केवल एक ही link exist करता है, ऐसा नहीं कि दो या तीन link exist करेंगे. So above mentioned primitives for send and receive is called symmetric naming. इसी naming को हम बोलते हैं symmetric naming, in which both sender and receiver have to specify the name of each other, right? जहाँ पर आपका process sender और receiving दोनों ही process एक दूसरे का name specify करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं symmetric naming, right? So this requirement raises two difficulties. इस requirement के साथ हमारी दो problems arise होती हैं, and वो problems क्या है? First problem is processes that don't belong to same application don't know each other's name. पहली problem है कि let's say कि हमारा process, जैसे हमें sending में receiver sending message में receiver process का ID mention करनी है और receiving में sending की ID mention करनी है. But what if the both processes are not on the same application? अगर वो सेम एप्लीकेशन में नहीं है तो एक दूसरे का नेम वो नहीं जानते होंगे, राइट. सो दिस रिक्वायरमेंट इज इनकन्वीनियंट फॉर सर्वर प्रोसेसेस. जो सर्वर पर प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए ये इनकन्वीनियंट है ये स्कीम. सो दैट्स व्हाई वी यूज अनदर स्कीम दैट इज एसिमेट्रिक नेमिंग.
So asymmetric naming is what? It is used in such situation where changes the syntax of which changes, right? The syntax of our primitive as send pj message. यहाँ पर तो pj का एड्रेस होगा जिसको रिसीव करना है, बट रिसीविंग में सेंडर का नेम नहीं होगा. The receive call indicates to receive the message from any process. Receive call indicate करती है कि ये किसी भी मैसेज किसी भी प्रोसेस के थ्रू आया है, right? Because receiver don't know the name of the sending process. So this is called asymmetric naming. And the third one is indirect naming. In indirect naming, processes do not mention each other's name in the send and receive statement. यहाँ पर आप processes का name mention नहीं करते हैं send और receive statement में. This naming is done by using mailbox or ports. Mailbox या ports का हम use करते हैं. A mailbox can be viewed abstractly as an object in which messages can be placed by processes and from which messages can be removed. So we can use the mailbox and port for indirect naming. Each mailbox has a unique ID. हर एक mailbox की एक unique ID होती है. And the owner of the mailbox is the process that created it. Mailbox का owner कौन होता है? जिसने कि वो create की है, वो ID create की है. और only the owner process can receive message from mailbox. केवल owner process ही mailbox से message receive कर सकता है. Any process that knows that ID of mailbox can send message to it. अगर उस मेलबॉक्स की आपको आईडी पता है तो कोई भी प्रोसेस उस आईडी पर आपको मैसेज भेज सकता है, राइट? बट रिसीव कौन करेगा? जिसने जो कि ओनर है, राइट? सो प्रोसेस पीआई, it will do what? It will create mailbox sample, right? And it will receive sample and comma messages, right? Sample messages create करेगा. And process pj क्या कर रहा है? जैसे कि process pj क्या कर रहा है? Send sample, right? क्योंकि process pi ने जो mailbox create किया है वो sample नाम का किया है, राइट? एंड प्रोसेस पीजे क्या कर रहा है? सेंड मैसेज कर रहा है सैंपल को. तो जो रिसीव होगा ये प्रोसेस पीआई को रिसीव होगा. सो दिस इज द indirect naming. So here we can see in this diagram that this is the owner of sample. PI process is the owner of sample and it has created the mailbox name as sample. And यहाँ पर आपके बफर में messages हैं. So we are seeing here that users of sample यानी कि PIJ, PK और PL तीन processes हैं. इनको पता है PI के mailbox ID. So they are sending the messages to this process PI and now PI becomes a receiver, right? So process PI creates the mailbox using create mailbox sample. Process PJ sends a message to the mailbox using the name of mailbox sample instead of process ID, right? तो process ID की जगह यहाँ पर क्या हो रहा है? mailbox use हो रहा है. Init send call. This is an instance of indirect naming, right? A message sent to mailbox is stored in a buffer. Buffer में store करते हैं जो कि message आपको भेजा जाता है, which can be delivered to process PI when it performs receive call on mailbox. जब भी कभी ये receive call perform करेगा इस mailbox पर, then the messages will be delivered to process PI. Some other process like PK, PL can also send the message to the mailbox. So I think student आपको ये टॉपिक IPC क्लियर होगा. यहाँ पर हमने बात की सेंडिंग और रिसीविंग प्रोसेस की, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कैसे होती है सिस्टम में. So much students for watching this video. Do like the video, share the video and subscribe the channel.